और अब खबरें विस्तार से। बारामूला पुलिस ने सहायक कार्यकारी अभियंता गुरमीत सिंह की गुमशुदगी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एक व्यापक तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है। बारामूला पुलिस ने जनता से भी लापता इंजीनियर गुरमीत सिंह का पता लगाने में हर संभव सहयोग का आग्रह किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में फोन नंबर भी जारी किया है जिस पर सूचना दी जा सकती है। एक बार फिर आपको बता दें, काफी अहम खबर है इस वक्त। और इस वक्त हम एजीएम ग्रुप मीटिंग चल रही है, इस बारे में हम सीधा प्रसारण के लिए आपको लिए चलते हैं मुंबई। Remain accessible to the members for inspection electronically if they so desire. I wish to introduce for the benefit of new members my colleagues on the board of our company. Shri Adil Zanul Bhai, Shri R.S. Gujral, Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Shri K.V. Kamath, Srimati Neeta Ambani, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri P.M.S. Prasad. All the directors of the company are present at this meeting. Shri V. Shrikant, Chief Financial Officer, Srimati Savitri Parekh, Company Secretary, Shri Alok Agarwal, Shri K. Sethuraman, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditor of the company are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated August 4, 2023, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31st, 2023 have already been circulated to members of the company electronically. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2023 do not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer. Accordingly, these reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, on 15th August we celebrated our 77th Independence Day. As our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji said in his address to the nation, this is a new India, full of self-confidence. ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हाफता है और न ही हारता है. This India is unstoppable. This India is tireless. This India does not gasp for breath, and this India does not give up. The historic success of Chandrayaan-3 demonstrated this yet again 5 days ago. On behalf of all of you, I send our heartiest congratulations to all the scientists and engineers at ISRO. Having consolidated its position as a global space power, what India can achieve in the future is indeed limitless. Friends, when we look at the geopolitical and economic situation, there are dark clouds of uncertainty hovering around us. However, there is also one sharp, unmistakable ray of certainty. The certainty that India will rise as a leading nation in our increasingly multipolar world. India's transformation as a prosperous, strong, and self-confident nation stands out as a beacon of hope for the world. This is reflected in India's G20 theme, One Earth, One Family, One Future. India's presidency of G20 has made today's divided international community take note of the inspiring words of our Upanishads. Vasudeva Kutumbakam, or the entire world
is our family. It is from this mantra that we at Reliance have derived and developed our We Care philosophy. We care for the planet. We care for humanity. We care for our beloved motherland, India. And, of course, we care for all our partners, employees, and shareholders. I will elaborate in the course of my address how this ethos pervades everything that we conceive, believe, and achieve at Reliance. Esteemed friends, in all humility, I would like to say that the new Reliance has been a forerunner of the emerging new India. With soaring ambition, we have set seemingly impossible goals and achieved them. This is evident from the fact that Reliance has cumulatively invested more than $150 billion in the last 10 years, higher than any corporate in India and comparable to the leading businesses across the world. We have shown a ceaseless spirit of innovation by offering to our customers products and services of the highest quality at prices amongst the lowest in the world. This can be seen from the fact Reliance's businesses and philanthropic initiatives have enhanced the quality of life as well as the ease of living of hundreds of millions of Indians. We have shown impeccable execution capabilities by consistently delivering on all our plans. This can be seen from the fact that Reliance has executed its projects, however big, complex, and difficult, well before time and at lower costs than global benchmark. The best way to describe this new Reliance is that we have now become a new age technology company with distinctive capabilities. Today, we are a producer of technology, a large-scale deployer of technology, as well as a democratizer of technology. Friends, these achievements are a testament to our faith in India, to the unlimited India opportunity, and to the boundless Indian talent. What is true about Reliance is equally true about scores of other Indian enterprises, leading corporates as well as startups. I hugely admire their brilliant achievements. They too have made India proud by enhancing our nation's fame globally with their spectacular growth, commitment to quality, and passion for innovation. Now it is the time for all of us in the business community to work together as a grand coalition to transform India into a fully developed nation by 2047, a prosperous India in which no Indian and no region will be left behind. Dear friends, I am delighted to report yet another year of stellar all-around performance. Reliance's consolidated revenues stood at 9,74,864 crores. Reliance's EBITDA for the financial year 23 was 1,53,920 crores, while the net profit was rupees 73,670 crores. Dear shareholders, Reliance's export for the year jumped 33.4% to 3.4 lakh crores. We accounted for over 9.3% of India's merchandise exports, up from 8.4% last year. In the financial year 23, Reliance's contribution to the national exchequer stood at rupees 1,77,173 crores. This included an increase in direct and indirect taxes of over 16,639 crores. Reliance also made the highest corporate social responsibility spending of rupees 1,271 crores. What gives me immense satisfaction is our contribution to employment creation, which is India's #1 necessity. Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. The total number of our on-roll employees is
nearly 3.9 lakhs. The number of indirect livelihood opportunities we have created is many times larger. In a sense, Reliance maintained its leading position in terms of revenues, profits, exports, market value, capital expenditure, employment generation, contribution to the exchequer, as well as social responsibility, spending, and impact. Dear shareholders, let me now present to you the performance of each of our businesses. I shall start with Jio, our digital services business. We have witnessed another year of outstanding growth, posting an all-time high revenue of rupees 1,19,791 crores and an EBITDA of rupees 50,286 crores. Jio's overall customer base has now crossed the milestone of 450 million subscribers, reflecting a year-on-year revenue growth of over 20%. Per user data consumption on Jio's network also has surged, with the average user now consuming over 25 GB every month. This translates to a monthly data traffic of 1,100 crore GBs, representing a 45% year-on-year growth. My congratulations to the entire Jio team for this exceptional achievement. Dear friends, Jio was launched 7 years ago with an ambitious mission to transform India into a premier digital society, where technology would bring positive change in every sphere of our lives and in every sector of the nation's economy. It has been our great privilege to contribute to this revolution, and we have invested our heart and soul into building a digital public infrastructure the entire world is beginning to admire. Jio has indeed been the main catalyst of New India's spectacular digital transformation. Now our ambitions are even higher, and they go beyond the shores of India, as I shall explain. Let's first discuss Jio's True 5G, our pioneering 5G broadband offering. We began our 5G rollout last October. In just 9 months, Jio 5G is already present in over 96% of the census towns of our country, and we are on track to cover the entire country by December of this year. This makes Jio 5G the fastest ever 5G rollout of this scale anywhere in the world. Today, nearly 85% of the total 5G cells operational in India are in Jio's network. At our current pace, we are adding one 5G cell to our network every 10 seconds, and we will have nearly 1 million 5G cells operational in our network by December. With this massive reach and capacity, here is our promise. We know that every home, small and medium businesses, factories, schools, colleges, and hospitals across India would like to have 5G. From December of this year, we will be able to promptly fulfill each and every demand for Jio 5G broadband connection across the country. Last year, I highlighted several advantages that differentiate Jio 5G from other operators, including our comprehensive spectrum, our standalone 5G architecture, and carrier aggregation. Recently, we used our own 5G stack to become the first operator in the world to launch commercial services on millimeter wave spectrum using standalone 5G. This high capacity, low latency layer will significantly enhance private 5G, home broadband, and enterprise use cases. We have also built our own low power small cells to go deeper into specific pockets of high consumption like tourist spots and temples in a highly energy efficient manner. These advantages, along with a massive scale of deployment, means
that the best 5G coverage, capacity, and experience is possible only with Jio 5G. Friends, with over 50 million 5G customers, we are already leading in 5G adoption in India. And we are the only company with the capacity to smoothly transition our entire 4G customer base to 5G with minimum additional capital expenditure. With the growing adoption of Jio 5G, we are also seeing an increasing trend of high ARPU post-paid customers choosing Jio as their preferred network. And Jio is the operator of choice for mobile users. Our net port-ins via mobile number portability was 5 times than that of our nearest competitor. We truly appreciate the confidence placed in us by our customers. We are inspired by their trust to reach a new gold standard of excellence in customer service by leveraging AI and cutting-edge CRM tools. Friends, Jio is also the only company that offers its 5G customers the complete ecosystem of connectivity, devices, support services, and value-added services. Through Reliance Retail, we have the most expansive sales and support network for 5G devices and services across India. And we have plugged all leading 5G smartphone OEMs into this network to ensure nationwide availability and adoption of the widest range of 5G devices. Taken together, this comprehensive ecosystem makes Jio the prime mover and the undisputed leader in India's 5G revolution. Friends, there is one important aspect of the Jio journey that I am especially proud of, and that is how we have transformed ourselves from a mere implementer to तो 46वीं सालाना एजीएम से संबोधन कर रहे थे मुकेश अंबानी। उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कि क्या कुछ पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में हासिल किया है रिलायंस ने, और उन्होंने एक चीज़ दोहराई, एक जैसे पीएम कहते हैं कि भारत न थकता है न रुकता है, बस आगे बढ़ता रहता है। उसी बात को उन्होंने यहाँ भी दोहराया है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। G20 की बैठक होने के बाद घाटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों को आगे आकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। पुंछ के चिकंदाबाग, खड़ी और गुलपुर इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू। 2 मुश्तबा अफराद के नजर आने के मुतल्लिका इत्तला पर शुरू किया गया तलाशी अभियान। एसओजी, फौज, पुलिस और सीआरपीएफ कर रही है मुश्तरका कार्रवाई। वक्फ बोर्ड के नए ऑर्डर पर अल्ताफ बुखारी ने किया रद्द अमल का इजहार, कहा अगर इम्तिहान होना है तो फिर पहले चेयरपर्सन का किया जाए इम्तिहान। मीरवाइज और दीगर को भी रिहा करने की कही बात। युवा राजपूत सभा के गिरफ्तार किए गए कारकुनों को किया गया रिहा। सरो टोल प्लाजा मामले में किया गया था गिरफ्तार। सभा के तर्जुमान ने डोगरों की फतह दिया करार, कहा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार। और एक बार फिर आपको बता दें कि बारामूला पुलिस ने सहायक कार्यकारी अभियंता गुरमीत सिंह की गुमशुदगी मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और साथ ही एक व्यापक तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। बारामूला पुलिस ने जनता से लापता इंजीनियर गुरमीत सिंह का पता लगाने में हर संभव सहयोग का भी आग्रह किया है। पुलिस ने उस सिलसिले में फोन नंबर भी जारी किया है और लोगों से अपील की है कि अगर लोगों के पास किसी तरह कोई जानकारी है इस सिलसिले में तो वो इस फोन नंबर पे भी सूचना दे सकते हैं। और ये नंबर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 9596767703। और भी एक नंबर है, इस पर पुलिस ने ये आग्रह किया है उन लोगों से भी कि अगर किसी भी शख्स को इस बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो इस बारे में पुलिस से जानकारी साझा कर सकते हैं।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सज्जाद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सज्जाद, और क्या डिटेल मिल पा रही है इस बारे में, किस तरह से लगातार जो है इस एसआईटी का गठन कर दिया गया है और क्या उम्मीद है कि कब तक ये गुमशुदगी का मामला हल हो सकता है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर गुरमीत सिंह जो हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो हैं R&B के, उसमें टेक्निकल अफसर के बतौर थे एडब्ल्यू थे वो वहाँ पे। और उनका यही है कि 25 तारीख को वो घर से निकले हैं और जब वो घर नहीं पहुंचे, घर वालों ने फोन किया है और उनका फोन नॉट रीचेबल आया है और बाद में वो परेशान होकर इधर उधर ढूंढने गए हैं। और इसमें उनकी गाड़ी जो है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बारामुल्ला उड़ी रोड है, वहां पे मिली है, सड़क के किनारे मिली है, गाड़ी लॉक थी और ये परेशान है काफी लोग। और इसके बाद पुलिस भी जाए वाक़े पर पहुंची और पूरी इन्वेस्टिगेशन इस मामले की चल रही है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो दरिया झेलम बह रहा है, यहाँ पे तलाशी कार्रवाई जारी है। और ये पहाड़ी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पे भी पुलिस है या लोकल मकामी लोग हैं और वो भी तलाश जारी रखे हुए हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए यहाँ पे उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये माजरा कैसे पेश आया। जी ये बताइए कि ये वाक़ा कैसे पेश आया और आपको कब पता चला? देखिए जी, 25 को शाम को जब ये अपनी एक ऑफिशियल मीटिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाम को करके 5 साढ़े 5 बजे घर आते हैं, तो वहाँ चाय पानी पी के फिर दोबारा वो ऑफिस काम के लिए जाने के लिए निकलते हैं। मिसेस से कहते हैं कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे कोई ऑफिशियल काम है तो मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि इनकी आदत है ये कभी देर रेट तक घर से बाहर नहीं रहते थे। जब थोड़ी देर के बाद वो ना आए तो उन्होंने, उसकी मिसेस ने फिर दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की, उनका फ़ोन ना मिल पाया और वो तशवीश में, सारा जो रिश्तेदारी थी वो सारी तशवीश में आ गई। उन्होंने फिर इधर उधर ढूंढना शुरू किया। जब लास्ट में जब उनको वो उड़ी की तरफ आए, बारामूला से खानपुर की तरफ से एक दरिया के किनारे में एक मोड़ है जिसको दाना खा मोड़ कहते हैं, उससे थोड़ा सा आगे उनकी गाड़ी जब देखी गई वो बिल्कुल लॉक थी, लॉक कंडीशन में खड़ी थी। इधर उधर ढूंढने के बाद इंजीनियर गुरमीत सिंह का कोई पता नहीं लगा और तब से लेके आज तक हम लोग सारे ही सिख कम्युनिटी चिंतित है। जहां हम चिंतित हैं वहां मुसलमान भाई भी इसकी खोज में लगे हुए हैं कि भाई इतना ऑनेस्ट ऑफिसर, अगर हम कहें कुछ कि भाई नहीं ये किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते, रूल आउट नहीं कर सकते कि भाई, क्योंकि एक ये होनहार ऑफिसर थे, आज तक ये टेक्निकल ऑफिसर हैं टू SC R&B। हमारी एक ही ये ख्वाहिश है कि भाई उनका, जिन लोगों ने भी उनका या किडनैप किया है या किसी हालत में भी रखा हुआ है, हम उनसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा करें, क्योंकि उनकी घर की हालत बहुत खराब है। बीवी उनकी दिन में 10 बारी मर रही है, बच्चे उनके रो के उनका बुरा हाल है। मैं उनसे अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि एक बारी उनको वो छोड़ दें, तो फिर हम ये सब उनका शुक्रिया करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उन लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया और आज वो हर मशीनरी उनको ढूंढने के लिए लगी है। हम उनका जैसे इन सरदार जी ने बोला कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया है और पुलिस का भी शुक्रिया है और ये यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी बाजियाब हो, उनका कुछ पता चले। और इस सिलसिले में मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, पूरे इस इलाके की तलाशी रही है। साथ साथ पुलिस और फौज ने भी इनका साथ दे रही है और SDRF वगैरह जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे। कुछ और रिश्तेदार हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप करीबी रिश्तेदार हैं उनके। तो क्या माजरा हुआ, क्या वाक़ा हुआ? जी सर, वो 25 तारीख को 5:30 बजे डाक बंगलो बारामूला में मीटिंग ख़त्म हुई। वो घर आए, उसके बाद उन्होंने चाय पी, तो घर में थोड़ी देर बैठे। 6 बजे के लगभग वो घर से निकले बोल के कि मैं ऑफिशियल काम के लिए, चीफ सेक्रेटरी ने आना है, मैं ऑफिशियल काम के लिए ऑफिस जा रहा हूँ। उसके बाद सर उनका, जब उन्होंने घर से फ़ोन किया मेरी दीदी ने, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर वो हम सब परेशान हो गए। उसके बाद बहुत सी टीमें हमारे लड़कों ने निकाली, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, हमने सब तरफ सर्च किया। उसके बाद उनकी गाड़ी दानखा मोड़ से 2 मोड़ बाद उनकी गाड़ी लोकेट हुई, तो गाड़ी बिल्कुल बंद थी। फिर चाबी घर से मंगाई गई, उनका फ़ोन सीट के नीचे फ्लाइट मोड पे पड़ा था। फिर हमने 3 बजे तक सर्च की, उनका कुछ पता नहीं चला।
तो हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बड़े थैंकफुल हैं कि आज तक वो हमारा साथ दे रही हैं और आगे भी हमारा साथ देंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं जिस किसी के पास भी वो हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमें उनको सही सलामत कर पहुँचा, प्लीज़। हमने इस वक्त धीरज रखने की जरूरत है, आपको धीरज रखने की जरूरत है और हमें भी लगता है कि जल्द जल्द वो बाजियाब होंगे, वो निकल आएंगे। तो आपको लगता है कि आपको और किसी की मदद की जरूरत है? पुलिस, आर्मी वगैरह आपके पास है? आपको लगता है कि सारे लोग बड़े तुमदेही से उनकी तलाश कर रहे हैं? बिल्कुल, सारे लोग कर रहे हैं, सिविल लोग भी कर रहे हैं, मुसलमान भाई हमारे भी कर रहे हैं। मैं फिर उनसे अपील करता हूं कि जिनके पास भी हैं प्लीज सही सलामत वो घर पहुंचा दें। हम उनसे माफी मांगेंगे, हम उनके पांव पकड़ेंगे जिस किसी के पास भी हैं, प्लीज। तो शुक्रिया आपका। और ये एक दरख्वास्त है, एक इल्तिजा है, इल्तमास है उनके रिश्तेदारों की, घर वालों की कि जिन किसी के पास वो हैं वो उन्हें छोड़ दें। और पुलिस ने बाकायदा एक एसआईटी का गठन किया है और लोगों से भी, जैसा मैंने पहले बताया, कि लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी मिलती है तो वो जो नंबर डिस्प्ले किया है स्क्रीन पर ऊपर, उस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। और पुलिस इस बारे में मदद लोगों से मांग रही है और एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 जगह इसमें लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।